whatever 30, 35 years we have worked, there is a lot of things which you learn during the journey. And journey is, a lot of people believe India is infinite market because of the 20% of the world's population. And I think India is a very, very interesting country, the most heterogeneous country you can ever believe in. I'll give you an interesting example of a temple or a religious economy. इंडिया में स्मॉल श्राइन्स से लेके बड़े ऐसे लेके 50 लाख टेम्पल होंगे, 10 लोगों को फीड करता है हर टेम्पल, 5 करोड़ लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं है, टेम्पल इकोनॉमी। तो हर इंडिया में ऐसी माइक्रो इकोनॉमीज बहुत है जिनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। एंड आई बिलीव 20% ऑफ इंडिया और 30% ऑफ इंडिया इन सम सेंस लिव्स ऑन गवर्नमेंट एड। तो व्हेन यू लुक एट द एंटायर मार्केट, आप एक एक चीज काटते जाएंगे तो आपको देखेगा मार्केट इतना ही है। एंड व्हाट अनफॉर्चुनेटली द रिपोर्ट्स विद द कंसल्टिंग कंपनीज मेक, आई वाज रीडिंग ऑल द डेटा के ई कॉमर्स बिल नाउ अभी 18 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, 57 करोड़ यूज करने लग जाएंगे 26 तक, और उसके बाद इतने लोग यूज करने लग जाएंगे, मार्केट इतना हो जाए। आई थिंक ये कभी होता ही नहीं है। एंड टू मेक दैट हैपन, it can't happen with commodity play, or it can't happen with where the value addition is not there. So my theory, which I wrote it also a long time back in my book, is I call that India is divided into 3 parts. 3 India consumption के हिसाब से, India 1, India 2, India 3. India 1 is the consuming class. Anybody who has a domestic help for me is a consuming class, because consuming matlab not basic consumption but some value added consumption. India 2 is the serving class, which makes our lives better. The drivers, the helpers, the peon, the watchman, the liftman. And for everyone, India 1, there is 3 to 3.5 India 2. And unfortunately, India 1 doesn't give enough money to India 2 to make them consume discretionary products. And then there is India 3, which is farm laborers. They live on aids and factory workers. उतना पैसा है जितना, तो अभी कंजम्पशन सिर्फ इंडिया 1 है यहाँ जो वैल्यू एडेड इकोनॉमी का कंजम्पशन करता है। कितना बड़ा है इंडिया 1, इंडिया 2 and 3? I would say, like in a city like Bombay, it's a very interesting definition. Until some years ago, 25% of people used to live in apartments. I would say 10 years ago. Today it might be 35. 5 to 8% people lived in chawls, and balance lived in slums. So India, I think every city will represent some way or the other. But if you had to aggregate the country, what do you think? I would say 11 to 13% would be the consuming class. India 1. India 1. Which is 20 crore. Which is around 20 crores. And it might be growing. And I think it's growing. And what pace of growth will depend, will determine everything. And unfortunately, we live in that community only, that India 1. जो भी इक्विटी इन्वेस्टर भी आते हैं वो भी इसी कम्युनिटी में घूमते हैं, उनको लगता है दुनिया बहुत भयंकर है।